Hello and welcome to Ripples Face It. This is Ranjan sir here. I am basically starting the Ancient Indian History series. Along with the Medieval Indian History also is running side by side. Ancient Indian History series re, we will basically try to tell you about the evolution and the historical timeline, correct? So what happens is it is very important to understand the timeline and the flow of history in order to do the questions. जदि तमे बहुत सारा questions करिया चाहूच and जहाँ भी questions आसुची in the examination सेगुड़ा सब प्राय तुम आर्ट एंड कल्चर को फोकस करके आसुची. सो आर्ट एंड कल्चर को जदि फोकस करके तुम क्वेश्चंस करिया चाहूच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हिस्टोरिकल टाइमलाइन कि टाइमलाइन रो फ्लोटा केमती थिला सेटा बेसिकली कोन मन रखिया पे बहुत इजी हो जाए माने मन रखिया पे भी इजी हो जाए प्लस तापर तुमरो क्वेश्चन आंसर सिलेक्शन रे क्वेश्चन आंसर एलिमिनेशन रे भी तुमको बहुत हेल्प करिवो जे ऑप्शंस को केमती एलिमिनेट करके तुम आंसर पाखरे पहुंचीबो. दैट विल हेल्प यू इन दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव. तो इट इज वेरी इंपोर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि हिस्टोरी हमरो कोटू स्टार्ट हेची एंड सेउटू हमरो क्वेश्चंस केमिति आसुची. बेसिक पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री will be focusing on examination. It will be not about focusing on the understanding of culture, heritage. Mane civil services re jemti we require mains perspective re we require the understanding of culture, the understanding of society, economy, polity, what was the background, what was the story. Se sabu dinso upare this series will not focus on that. This series will be purely focusing on what questions are coming from the ancient Indian part and how to attempt those questions, as many of the state examinations are being lined up in a few time. So in a few months there are a lot of examinations that will be conducted. So I'll be generally telling this series as a revision class. You can take it as a revision class, you can take it just a classes before the examination जमती touch up हो कि तमरो revision हो सही perspective रे तमे ए class को receive करो. It is not about the classes of in-depth detail. We will be very precise in discussing the questions. तो सेथिपाई कोना ancient history ता तमको एथिपाई बुझिबा को पड़िबो that whenever you see questions on culture, art and culture, art, heritage किंबा तमरो any kind of factual information जमती IBC रू मोहनजोदारो हो हरप्पा हो कि तमरो Vedic civilization रू हो any kind of factual information that is coming from the ancient Indian history will be clear. कौनसी प्रकार रो question answer रहिबो नाही. After taking the classes I'll also discuss a lot of questions जोड़ा तमरो state examinations रे आसुची सेही प्रकार रो बहुत सारा questions भी हमें discuss करिबा and we will take in the discussion part as well, correct? So you will get an idea ki questions kemiti aସୁchi and how to attempt those questions kemiti kariyar achi au kemiti option eliminate kariki bi answer ame pahunchi pariba. तो basically जो ancient Indian history start होची correct जो ancient Indian history start होची this starts from the evolution of human life, correct? Evolution of human life. तो ह्यूमन रो इवोल्यूशन सहित ही तमरा हिस्ट्री रो इवोल्यूशन किबा हिस्ट्री रो बिगिनिंग आरंभ होची. तो वी आर बेसिकली स्टडीइंग हिस्ट्री आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ मैन. माने समिति तो इफ यू सी द लाइफ ऑफ अर्थ इज 4.4 बिलियन इयर्स अगो. सो अर्थ रो इवोल्यूशन हेला देन बहुत सारा एनिमल्स आसिले देन बहुत सारा माने बहुत सारा फेजेस ऑफ टाइम गला. क्रेटाशियस पीरियड हला तमरो हला होलोसिन पीरियड हला, correct? Then Pleistocene period comes in. The Pleistocene period human evolution start about something around 1.4 billion years ago. It is the fact is also changing in the regular NCERT books तुमको एबे मिलिबो जे from such archaeological evidences रो आमे पाउचु जे it is nearly around कि केते 15 lakh years ago human evolution देखा जाइछि आ सेठू human रो evidence आमे इंडिया रे पाइछु. But in then Tamil Nadu रो new NCERT रे तमे पाइबो 20 lakh years ago माने something around 2 million years ago आमे human evolution पाइछे and तांकर evidence भी आमे receive करिछे. तो जेमती जेमती archaeological excavation चालिछि तो archaeological excavation चालथिबो सेमिति नुवा नुवा facts बाहरथबो. तो history keeps on changing. बहुत सारा facts change होछि, बहुत सारा facts re-assess करा जाउछि. तो that is the secondary part. But basically we are getting an idea कि 15 lakh years रू आरंभ करो जमती तमरो NCERT मेंशन करूची 15 lakh years रू आरंभ करो up to present day हमरो human evolution चलिछि, correct? 15 lakh years ago
correct, 15 lakh years ago, nearly you can estimate that particular point of time. कहना एबे हमें AD रे 2000 आछे 15 lakh BC जोटा को कुहा होची तो 15 lakh 2000 BC something around that से time हे जीवो. You don't have to remember this, no one will ask this. एमती क्वेश्चन आसे नहीं टेस्ट सीरीज रे एमती बेसिकली क्वेश्चंस पका जाए कि पैलियोलिथिक एज कोठू कोठी थिला किबा मेसोलिथिक एज को पीरियड रु को पीरियड थिला एडा सब एमती टेस्ट सीरीज रे क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा को दिया जाए. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू रे एमती क्वेश्चन आगुरु हुए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसुतला बट दिस टाइम द एग्जामिनेशन आर आल्सो माने अपिंग देयर लेवल तो तांको लेवल भी बहुत ही ऊपर आसुची. तो सेमिति बेसिक क्वेश्चन जोड़ा को प्राय समस्त जानउचंती कि बा जानि सारलेनी से क्वेश्चन जाओ एबे रेगुलर फ्लो रे आसु नाही जोड़ा को इंपोर्टेंट कल्चरल पार्ट से गुडा को तमरो क्वेश्चंस रहबो. तो 15 लाख इयर्स अगो इन एंड आउट ऑन एन एवरेज यू कैन होल्ड इट एज 15 लाख बीसी. करेक्ट, 15 लाख बीसी रु हमें धरिबा जे स्टोन एज आमर आरंभ हो गला. बट दी स्टोन एज वाज एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस, बहुत एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस रे ए स्टोन एज स्टार्ट हेतला. तो सेति पई जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आमे बिल्ड अप करूचे, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री रो फर्स्ट इंपोर्टेंट दिनस जोड़ा तुमको बुझिवार अछि दैट इज द टाइमलाइन. वंस यू आर वेरी क्लियर विथ द टाइमलाइन, इफ यू आर वेरी क्लियर विथ द टाइमलाइन ताहले भी तुम हिस्ट्री रो बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर परबो ओनली विथ द हेल्प ऑफ टाइमलाइन. सच एज देखो आई विल राइट इट, यू जस्ट एनालाइज कि हाँ ए दिन सरो भी बहुत सारा क्वेश्चन आसीची, बहुत सारा क्वेश्चन एथुरु ही सॉल्व हो जिवो. इफ यू सी दिस द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री गोज इन अ फ्लो. फर्स्ट द बिगिनिंग इज योर प्री हिस्टोरिक एज. करेक्ट, प्री हिस्टोरिक एज. प्री हिस्टोरिक एज बेसिकली कहीं कहा जाए प्री हिस्टोरिक एज माने जोटा हिस्ट्री पूर्वरु माने जोठी हमरो कोनोसी प्रकार रिटन रिकॉर्ड्स किंबा रिटन एविडेंसेस नाही सेटा को हमें प्री हिस्टोरिक एज बोली कहू. बेसिकली जो एंशिएंट हिस्ट्री किंबा टोटल हिस्ट्री तमरो तीन भाग रे विभक्त. गोटे होची प्री हिस्टोरिक, गोटे होची प्रोटो हिस्टोरिक, आ गोटे होची तमरो कंटीन्यूअस हिस्ट्री. तो प्री हिस्ट्री टा सेही पार्ट जो पार्ट रे तमरो कोनोसी प्रकार रिटन एविडेंसेस नाही, जो पार्ट रे यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ क्लू कि आमे सेठी कोन होतला कोन न होतला से माने किछि लेखि कि छाडी कि जाई नाहंती. व्हाटएवर हिस्ट्री वी आर गेसिंग इट फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस. आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस माने तांकर टूल्स कोन यूज करथले, को प्रकार पेंटिंग करथले, कोठी रहुथले, ड्वेलिंग पीसेस कोन खाउथले, सेथिरु रेडियो कार्बन डेटिंग, पोलेनोग्राफी ए सब मेथड्स यूज करके बहुत सारा दिनस माने गेस करा जाए. तो सेति में प्री हिस्टोरिक एज जोटा कुहा जाउची सेटा in the regular books देखो I'll tell you right now also in the regular books regular examinations 5 lakh BC रो concept भी अच्छी. करेक्ट, कहीं ना आगुरु हमें एटा यूज करूथुलु 5 लाख BC रु आरंभ करिकी अप टू 3000 BC एटा भी तमरो बुक्स रे मेंशनड हेकी थिबो किंबा तुमको गूगल रे इंटरनेट रे कोठी ना कोठी एई इन्फॉर्मेशन भी थिबो. बट इट अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डिस्कवरीज इट इज नाउ चेंजिंग अप टू 15 lakh BC to 3000 BC. करेक्ट, प्री हिस्टोरिक एज कहिबार माने कोन जोठी हमर पाखरे कोठी भी रिटन एविडेंसेस नाही, नो रिटन एविडेंसेस. करेक्ट, व्हाटएवर हिस्ट्री इज बीइंग रिकंस्ट्रक्टेड इज ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स रो बेसिस रे वी आर सर्चिंग दिस पर्टिकुलर हिस्ट्री को हमें रिकंस्ट्रक्ट करूचे. तो प्री हिस्टोरिक एज देन कम्स योर प्रोटो हिस्ट्री. करेक्ट, तो प्रोटो हिस्टोरिक एज टा कोटा. Correct. Proto-history is a phase where the human evolution had taken place. Humans माने बहुत सारा evolve माने बहुत सारा दिन सो evolve कलेनी, बहुत सारा दिन सो discover कलेनी. Prehistoric age रे ही हमें आगु को एडा just timeline पहुँचे आगु को जल्द detail discuss करी मैं कोई prehistoric age रे ही fire discovery हिसार थला, agriculture discovery हिसार थला, domestication of animals भी हिसार थला. तो whatever this discoveries were there were done in the prehistoric age. तो human ता सहित निजो सहित communicate करिबार भी किछि ना किछि method device करि सार थला. लोगों संगे केमिति communicate करिबा परस्पर सहित कम्युनिकेशन जो सिलेबल लैंग्वेजेस जेमती एनिमल्स कम्युनिकेट करछन्ती सेमिति नुहे थ्रू रिटन राइटिंग फॉर्मेट्स भी हमें कम्युनिकेट करि परबे जदि पाखरे ना हो. बट दिस पर्टिकुलर प्रीहिस्टोरिक फेज इज इन दिस पर्टिकुलर फेज देयर आर रिटन एविडेंस अच्छी हम पाखरे. वी हैव फाउंड सम ऑफ द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट. रिटन एविडेंसेस इज प्रेजेंट बट दे हैव नॉट बीन डेसिफर्ड. Correct, decipher माने बुझा है ही नहीं. Whatever they are trying to communicate has not been deciphered by us. आमे सेटा को बुझिनु what kind of communication are they trying to
tell. So that is particular a part where we have pictographic scripts, but we have not deciphered what are they trying to convey us. So this part falls under the proto-history part, and proto-history part is also a part which coincides with your Chalcolithic age. Chalcolithic age जोटी humans माने metal use करवा start करते चाल्को माने कॉपर आउ स्टोन को मिसई की यूज करवा स्टार्ट करथिले तो चाल्कोलिथिक एज सहित भी कोइंसाइड करिवो ता सहित इंडस वैली सिविलाइजेशन भी ए पर्टिकुलर पीरियड रो पार्ट ता माने इंडस वैली सिविलाइजेशन रे जो हमरो यूनिकॉर्न सील अछि हरप्पन सील अछि दीपशुपति सील अछि ए सब रे जो पिक्टोग्राफिक सिंबल्स हेछि कि पिक्टोग्राफिक राइटिंग अछि से राइटिंग गुडा का हमें बुझिनु जे व्हाट काइंड ऑफ मैसेज इज दैट बट से पिक्टोग्राफिक सिंबल्स को देखि के हमें किसी ना किसी आइडेंटिफाई करछु जे हां एई प्रकार रा एनिमल्स रहउथबे एई प्रकार रा लोक रहउथबे एई प्रकार तांकर सोसाइटी रो बिलीफ रहिथिबो एंड एई प्रकार सिस्टम से माने चले थिबे तो प्री हिस्ट्री हो कि प्रोटो हिस्ट्री हो दिस इज ऑल अबाउट गेसिंग तो एबे प्री हिस्ट्री तमरो 15 लाख रो 3000 धर्म ना प्रोटो हिस्ट्री रन्स फ्रॉम 3000 बीसी करेक्ट टू 1500 बीसी टाइमलाइन रे पछकु चलछे वी आर गोइंग बैक इन द टाइमलाइन बीसी एडा बिफोर क्राइस्ट करेक्ट तार नुआ गुटे सेक्युलर फॉर्म ऑफ टाइमलाइन इज आल्सो देयर बीसी बिफोर क्राइस्ट जोटा हमें यूज करथला आगरो इट इज नाउ दी बीसीई बिफोर कॉमन एरा तो एमती डिवाइड कर देचंती एबे जो हमें प्रेजेंट एरा रे रहउचे दैट इज कॉल्ड एज द कॉमन एरा सीई को जाउची एंड जोटा या पूर्वरु थिला माने जीरो पूर्वरु जोटा थिला दैट इज कॉल्ड एज बीसीई तो बिफोर कॉमन एरा सेटा को कुहा जाउचे राइट तो बीसीई रे भी तमे लिखि परिबो इट इज अ सेक्युलर फॉर्म ऑफ अप्रोच दैट इज बीइंग डिवाइस्ड इन द रिसेंट टाइम्स तो बीसीई भी लिखि परिबो 3000 बीसी टू 1500 बीसी तमरा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड चाल्कोलिथिक एज इंडस वैली सिविलाइजेशन सब ए भीतर फॉल करिवो देन कम्स द आर्यन सिविलाइजेशन आर्यंस मानकर इन्वेजन हबो आर्यन सिविलाइजेशन रन करिवो तो हमरो कोन हे जिवो वैदिक एज आरंभ हे जिवो करेक्ट नाउ दिस वैदिक एज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स Vedic age itself is divided into two parts. Vedic age ranges from Vedic age ranges from 1500 BC to your 600 BC. Correct. तो 1500 BC रु 600 BC पर्यंत Vedic age चलीची Vedic age को दी भाग रे विभक्त करा हेची गोटे होची तमरा early Vedic age, right? One is your early Vedic age and the other is your later Vedic age. Later Vedic age. The dividing line is the discovery of iron. 1000 BC, discovery of iron. तो एपर्यंत मनीष कौन यूज करुची एपर्यंत मनीष यूज करुची copper and copper alloys, copper, tin, bronze, these are the metals that is being used by the humans. Now in the 1000 BC they discover iron तो तापरे iron use होबा start होबा iron रे दीटा दिन सो हे जीवो कोन गोटे होची मिल जीवो तांको axe for clearing the forests and second दिन सो तांको मिल जीवो होची plow जो एग्रीकल्चर किंबा इरिगेशन को से माने फोकस करूथिले रेगुलरली स्टोन एज रे फूड माने फूड गैदरिंग एंड हंटिंग रु से माने धीरे धीरे गोटे परमानेंट लाइफस्टाइल किंबा गोटे सेडेंटरी लाइफस्टाइल आड़ को मूव करूचंती से माने भी चाहूचंती सेटल एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स टू सेटल डाउन आमे समस्त चाहूचे टू सेटल डाउन तो सेमिति स्टोन एज रो मैन भी चाहिए टू सेटल डाउन केते आउ से नोमैडिक लाइफस्टाइल बंचिबे एपट सेपट केते आड़ बुलुथुबे दे वांटेड टू सेटल डाउन तो एग्रीकल्चर ऊपर बेसी फोकस कले हंटिंग एंड फूड गैदरिंग को टिके कम फोकस कले तो सेही जो पार्ट रे प्लाउ हेल्प्ड देम टू irrigate more and more lands, to cultivate more and more lands. Axe helped them to clear the forest clear hela land अधिका अधिका मिलिला cultivation भी तांकु हे गेला तो एउटू कोन हबो सेटल्ड लाइफस्टाइल आसीबो लेटर वेदिक एज रे यू गेट ए सेटल्ड लाइफस्टाइल दिस इज फ्रॉम 1000 BC टू 600 BC करेक्ट एटा गोटे सेटल्ड लाइफस्टाइल फॉर्मेट अर्ली वेदिक एज 1500 BC रु 1000 BC एठी कोन ए माने सेही सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल बंचुचंती सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल करेक्ट माने नॉर्मल हार्ट्स सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल किसी परमानेंट सेटलमेंट नाही एठू धीरे धीरे आमे परमानेंट सेटलमेंट आडकू मूव करिबा परमानेंट सेटलमेंट आडकू जेतले मूव करिबा 600 BC रु धीरे धीरे आमे ग्रोथ ऑफ टाउन्स ग्रोथ ऑफ मेजर सिविलाइजेशंस और ग्रोथ ऑफ मेजर किंगडम्स भी देखिबा तो फ्रॉम द एज ऑफ 6000 BC 600 BC वी सी दी अराइवल ऑफ महाजनपदस ता माने कोन एका थरे महाजनपदस एमिति तो नाही जे 600 BC आरंभ हला महाजनपदस बाहर पड़ले सेमिति नाही इट इज जस्ट कि 600 BC
पहुँचला बेलू वी आर ऑलरेडी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम जोठी बहुत सारा महाजनपदस आमे देखुचे ता माने कोन फ्रॉम द इवोल्यूशन ऑफ आयरन 1000 बीसी रु 600 बीसी को आसीबा भितरे मनुष्य धीरे धीरे सेटल हेलानी सेटल हेकी छोटो मोटो टाउन्स बिल्ड कलेनी छोटो मोटो ट्राइब्स दे हैव गैदर्ड से माने क्लान तयारी कलेनी क्लान तयारी कला परे से माने धीरे धीरे गोटे गोटे जनपद तयारी कले किछिटा जनपद मिसिकी किछिटा महाजनपद तयारी कले ता माने जहार ट्रेड भलो जहार वार भलो जहार सिक्योरिटी भलो से माने धीरे धीरे महाजनपदस को कन्वर्ट हे गले सो दीज महाजनपदस रेंज फ्रॉम बेसिकली 600 BC to 300 BC we write it down but this is on an average basis कहना 323 रे मौर्यन एम्पायर स्टार्ट हे जिवो तो महाजनपदस रो कांसेप्ट सेटु हटि जिवो कहना सबु महाजनपदस चंद्रगुप्त मौर्य कैप्चर करिवे ऑल 16 महाजनपदस जोटा इंडिया रे थिला से टाइम रे एवरी 16 महाजनपदस वाज कैप्चर्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य सो दैट इज व्हाई 600 BC to 300 BC आमे एम्ति लेखुचे बट 323 BC रु टाइमलाइन चेंज हे जिवो टाइम स्केल चेंज हे जिवो राइट तो महाजनपदस सहित whenever there is evolution मन रखता whenever there is evolution whenever there is growth in economy whenever there is growth in prosperity ताहले there is also growth in religion whenever you have a lot of money माने basically कहवा कथारा होची जेतेबेले पैसा sufficient समस्त को पाखु आसे खाइबा पीबा जेतेबेले sufficient हे जाय when human needs and wants are satisfied ताहले सेतेबेले ह्यूमन टिके फिलोसॉफिकल आडकू गति करंती फिलोसॉफिकल ग्रोथ आडकू गति करंती माने हायर एंड ऑफ नॉलेज स्पिरिचुअल लाइफ से आडकू मूव करंती सो दैट इज व्हाट आल्सो हैपेंड महाजनपद सहित इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी ए सब भी देखा देला ता सहित ग्रोथ ऑफ रिलीजन भी देखा गला करेक्ट ग्रोथ ऑफ ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज करेक्ट ग्रोथ ऑफ ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज और we will write it as growth of heterodox societies correct ta mane kona you can write it as heterodox societies or I'll simplify for you growth of various religious cults correct simple language रे बुझो heterodox societies will be a bit difficult काहे कि ना we see around 62 heterodox societies were there after the evolution of iron and iron age रो आरंभ हला पर 62 heterodox societies were formed but ता भितरु किछिटा दिन से important हबो that is your Buddhism Jainism correct the Ajivika sect ता सहित एटसेट्रा दी काल भैरव सेक्ट अच्छी तमरो वैष्णविज्म अच्छी शिव शैविज्म अच्छी ऑल ऑफ दीज विल स्टार्ट इवॉल्विंग ईच अदर करेक्ट तो बेसिकली ये जो 600 to 300 BC रो आमे ग्रोथ पढ़ू इट इज आल्सो रिटन इन सम ऑफ द बुक्स एज योर प्री मॉरियन एज रे एज बोली भी बहुत सारा बही रे क्लासिफाई करा जाए that this is the pre-Mauryan age तो pre-Mauryan age रो मानेटा होची Mauryans establish हबा पूर्वरु जो महाजन पदस ग्रोथ हेतिला सेही महाजन ग्रोथ पदस रो ग्रोथ सहित बुद्धिज्म जैनिज्म आजीविका सेक्ट शैविज्म वैष्णविज्म बहुत सारा रिलीजियस कल्ट्स रो भी ग्रोथ हेतिला तो दिस इज अ फेज वेयर वी सी growth of religion as well as growth of independent kingdoms तो महाजनपदस टाइम रे बिंबिसार अजातशत्रु the Shishunak dynasty then comes the Nanda dynasty and एठू तमरो evolution of greater kingdoms भी एई concept तमे एठू 600 to 300 BC पर्यंत देखिबो राइट तो 600 to 300 BC परे if you see arrives the Mauryan age correct एबे Mauryan age रो concept होची Mauryan age is a time when we see the establishment of universal empire माने कोन whenever a particular kingdom has its boundaries as natural boundaries ही गोटे kingdom रो boundaries आउ ता आखपाखरे सेमति किछि kingdom नाही जोटा ताको चैलेंज करूची तो सेही kingdom को हमें universal empire बोली कहू तो हिंदुकुश माउंटेन रो नै की तमरो हिमालयन रेंज करेक्ट I'll tell you here if you see the Indian map here correct the Hindu Kush mountain ranges correct Hindu Kush mountain ranges the Himalayas Western Ghats the Eastern Ghats correct Bay of Bengal
Arabian Sea. The Mauryan Empire was spread in all areas. Mauryan Empire was spread in all areas. The 16 Mahajanapadas were under the control of Mauryans, correct? And that is why natural boundaries such as the Himalayas, correct? Epade tomara Bay of Bengal, epade tomara Arabian Sea, correct? And here your Hindu Kush mountain range. Eita ku kuha jaye universal empire jatale natural boundaries hi cover kare tomara kingdom ro territorial boundary, correct? So Mauryan age re what is important? Mauryan age starts from around 323 BC and it goes forward up to 183 BC, roughly around 183 BC jatale Kunala Dasharatha and the last rulers of the Mauryan empires decline, correct? तो एवठू स्टार्ट हो तमरा other forces गोटे बहुत बड़ा territory थिला. Whenever there is this kind of empire history जतल तुम देखिबो, if there is this kind of empire जोटा पूरा बहुत ही large area cover करथिला, definitely से empire सरिला बेलकू बहुत सारा छोटो dynasties growth करिवे. That is how the history goes. गोटे superior control आसीबो, बहुत superior control आसीबो, superior ruler आसीबे and he controls a very large area of land. से ruler जतले चली जिबे तांकर परवर्ती dynasty टा decline करिवो आउ छोटो मोटो rulers माने भी evolution माने evolve हेकी निज निजर independent territory करिवे. सेमती तमे Mauryan age देखिबो, Gupta age देखिबो, you will see Akbar the Great, correct? All of these territories will result in small territories. गोटे टाइम आसीबो जतले पूरा बहुत बड़ बड़ territories हेबे, तापर गोटे टाइम आसीबो जतले बहुत छोटो छोटो territories भी आसीबे. तो then we come into the post Mauryan age, correct? Post Mauryan age रे कोन हबो जेमिति मु कहिली large kingdom was controlled, correct? And that falls. तो post Mauryan age roughly around tomorrow say 183 BC रो आरंभ करो, correct? And it goes up to 350 AD until the rise of Guptas. तो एठी आमे बहुत दिन से देखिबा फॉरेन इन्वेजन्स देखिबा. फॉरेन इन्वेजन्स इन द सेंसेस बाहरु तमरो कुषाण डायनेस्टी आसीबे, बाहरु तमरो शाकर्स पार्थियंस फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट पार्ट, कुषाणस फ्रॉम तिब्बत will come in. कुषाण डायनेस्टी, कुषाण रो सबुठ इंपोर्टेंट रूलर कनिष्क, करेक्ट? ही कम्स इन. देन तमरो ए जो इंडिजिनियस डायनेस्टीज भी डेवलप हेबे, द सातवाहनस, महामेघवाहन, खारवेल, शुंग डायनेस्टी, कन्वर डायनेस्टी, एमिति इंडिजिनियस डायनेस्टीज भी ए टाइम रे रूल करबा स्टार्ट करबे. पोस्ट मॉडर्न एज इज ए टाइम ऑफ independent territories, small kingdoms, small independent territories, regional kingdoms and also foreign invasions. So foreign invasions भी गोटे part post modern age रो and regional kingdoms भी गोटे part. तो post modern age परे we see the rise of Guptas, correct? And which is called as Gupta age, correct? This Gupta age ranges from 350 AD, roughly around 350 AD to 550 AD, correct? देखो एटी तुम बीसी सरीला 183 बीसी रु 0 रु पुणी 350 एडी फॉरवर्ड. तो एबे आमे एडी रे जोटा चलबा आमे फॉरवर्ड चलबा. यू कैन आल्सो राइट इट एज बीसीई, सॉरी यू कैन आल्सो राइट इट एज सीई, कॉमन एरा भी लिखि परिबो. ता पूर्व एज टाको तमे बीसीई बोली भी नोटिफाई करि परिबो. गुप्ता एज परे यू सी द एज ऑफ हर्षवर्धन, एज ऑफ हर्षा, एज ऑफ हर्षा भी कहा जाए. Age of Harsha is roughly around in the 6th century AD when comes in and Chinese travelers arrive. बहुत सारा सबू ages रे किछि ना किछि बाहरु travelers, Al-Masudi, Huensa, Fahen, all of these are coming into there. तो से foreign accounts रो भी हमें किछि history gather करू. तो Age of Harsha is basically your 6th century AD, correct? माने roughly around up to 670 AD, 650 AD पर्यंत तमरा एज ऑफ हर्षा चलिबो. एंड एज ऑफ हर्षा जतले सरी जिवो से मोमेंट रे आउ थरे इंडिया बहुत सारा रीजनल किंगडम्स को डिवाइड हे जिवो. देन वी सी द राइज ऑफ राजपूत्स, देन वी सी द इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गजनी, देन वी सी द राइज ऑफ इस्लाम. तापरे आमे सेपटे साउथ डायनेस्टीज भी देखिबा, करेक्ट? We will see the rise of Rashtrakutas, Palas and Pratiharas, tripartite struggle, and that enters into the medieval India. एई सबु ancient India गोटे फ्लो रे थिबा सत्वे एई पर्टिकुलर पार्ट रे फ्रॉम द पोस्ट मॉडर्न एज एरा जेते बेले रीजनल ब्रेकअप हबो, इंडिया बहुत सारा छोटो मोटो रीजनल किंगडम्स रे डिवाइड हबो. सेते बेले साउथ रे बेसिकली कोन मॉडर्न एज मॉडर्न एरा टा मु सेति पे एठु आउ
क्रॉस कलेनी मौर्यन डायनेस्टी स्प्रेड्स अप टू कर्नाटका श्रावण बेला गला मैसूर उटी पर्यंत स्प्रेड हम दिस पार्ट वाज नेवर ऑक्युपाइड बाय एनीवन कहीं एठी आउ किछि बेसिकली माने एग्रीकल्चर एंड ऑल से किछि बेसी बूस्ट न थाए सेठी मिनरल्स एंड अलगा जिनस अछि ट्रेड बेनिफिट्स अछि ट्रेड सरप्लस अछि बट कैपिटल सिटी जत पाटलिपुत्र रे थिला आउ एक्सटेंड तळकु जीवा पय भी साहस हलानी सम पार्ट्स ऑफ ओडिशा कलिंग वाज आल्सो नॉट कैप्चर्ड दैट इज आल्सो देयर तो कलिंग वॉर इज अ फेमस वॉर यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट तो सेति पे ए साउथ रे किछटा इंडिजिनियस डायनेस्टीज सबु बेले पय रूल करूथिले एंड दे वर देयर दैट इज कॉल्ड एज योर संगम एज एंड दिस संगम एज begins from around 300 BC to 300 AD correct ए संगम एज इज अ सेपरेट एंटिटी आको गोटे सेपरेट एंटिटी करके पढ़ा जाए आ संगम एज सहित सदर्न डायनेस्टीज इज आल्सो टॉट दैट इज द चोलस द पांड्यास द केरलीपुत्रस करेक्ट तो सदर्न डायनेस्टीज भी से टाइम रे इंपॉर्टेंट दिस इज अ पर्टिकुलर पार्ट यू विल सी when we will discuss about खारवेल महामेघवाहन खारवेलंकर भी बहुत वॉर अच्छी चोलस पांड्या सहित जोठी से सबू कॉन्फेडरेसी को हरई थिले एंड सेठी से सदर्न किंगडम्स पाखरो भी बहुत सारा लूट एंड बूटी गेन करथिले सतवाहन सहित भी तांकर वॉर अच्छी तो इंडिजिनियस किंगडम्स एंड इंडिजिनियस डायनेस्टीज वी विल डिस्कस ग्रेजुअली बट दिस इज द बेसिक टाइमलाइन तो बेसिक टाइमलाइन रे हम जति फ्लो करूचे करेक्ट इफ यू सी हियर तो 5 लाख BC रू स्टार्ट करिकी अप टू 10,000 BC 5 lakh BC रू 10,000 BC 5 lakh as per the old information as per the new information is 15 lakh BC to 10,000 BC आमर चली जीवो पैलियोलिथिक एज करेक्ट पैलियोलिथिक एज 10,000 BC to nearly around 6,000 BC is your Mesolithic correct 6,000 BC to 3,000 BC is your eta KBC है जो correct 6,000 BC to your 3,000 BC is your Neolithic age 3,000 BC 3,000 BC to 1,500 BC is your Chalcolithic age तमने roughly around from beginning from 15 lakh BC to your 1500 BC we see the Stone Age only correct Stone Age and the mixture of stone and metals तो एवटू एटा purely Stone Age this is entirely Stone Age this is stone and copper mixed एटी यूज होची करेक्ट आ तळकू जेतेबेले स्टार्ट हबो 1500 BC परे वी सी कंप्लीटली मेटल एज तो जेतेबेले मेटल एज कथा हमें कहबा वी स्टार्ट फ्रॉम दी वैदिक सिविलाइजेशन सेटा एटा भी टाइम जोटू कंटीन्यूअस हिस्ट्री आरंभ होईची माने रिटन एविडेंसेस वेदस पुराणस ए सब दिनस हम पाखरे अवेलेबल अछि तो मेटल एज रे तमरो अछि कोन वैदिक एज रे कॉपर ब्रोंज तो यूज होथबो स्टार्टिंग रे ता सहित तमरो आयरन भी डिस्कवर है कि यूज होगा को लगे तो 1500 BC to 600 BC वैदिक एज परे यू सी द एज ऑफ महाजनपदस just simplifying and gathering all of this Mahajanapadas 600 to 300 600 BC to 300 BC then the age of kingdoms eta metal age sari gala Mahajanapadas evolution growth dynastical formation kingdoms ro generation तापर आस जीवो तमरो डायनास्टिकल रूल माने किंगडम्स तो किंग्स रूल राइट तो किंग्स रूल जतले स्टार्ट हबो मौर्यन सहित आरंभ हबो करेक्ट दिस किंग्स रूल मौर्यन सहित आमे एथि पे लिखुचे महाजनपदस रे भी देयर आर किंग्स करेक्ट किंग्स आर देयर डायनेस्टीज आर देयर बट सेमाने बहुत ग्रेट डायनेस्टी एस्टाब्लिश करि नथले दैट इज व्हाई सेमान को महाजनपदस रे ही कंसीडर कराउची बट हियर वी कॉल इट एज मौर्यन एम्पायर करेक्ट शिशुनाग डायनेस्टी कुहा जाउची नंद डायनेस्टी कुहा होची मौर्यन एम्पायर दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ एम्पिरिकल रूल करेक्ट मोनार्कियल रूल रो एटा आरंभ
एठी जहाँ रूल होतला रिपब्लिकन फॉर्म भी अच्छी मोनार्कियल फॉर्म भी अच्छी बहुत सारा महाजनपद रे रिपब्लिकल फॉर्म अच्छी मोनार्कियल फॉर्म अच्छी से द सोसाइटिकल अंडरस्टैंडिंग तुमको दरकार नहीं फॉर द क्वेश्चन आंसर आई विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस इन डिटेल्स दिस इज द जनरल टाइम फ्लो तो किंग्स रूल रे तमे मौर्यंस देखिबो करेक्ट मौर्यंस परे गुप्तास देखिबो जो माने लार्ज डायनेस्टीज करथिबे करेक्ट द गुप्तास रूल एंड द एज ऑफ हर्षवर्धन correct they established strong and large dynasties clear तो 600 300 BC 300 BC रू 300 BC रू नहीं की तमरो 350 AD पर्यंत मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन पळेबो 350 रू 350 रू 550 गुप्ता पळेबे 550 रू आरंभ करिकी नियरली अराउंड 670 AD तमरो हर्षा एंड हर्षवर्धन रो आफ्टर मैथ रे तांकर जो गढ़वाल डायनेस्टी आउ से गढ़वाल डायनेस्टी आगु को केमती कनौज पॉपुलर हबो सेटा पळेबो तापरे जोटा तमरो ब्रेक करबो एज ऑफ हर्षा परे तो सेटा गोटे डार्क पीरियड जोठी आउ केही रूलर नाहंती समस्त छोटो मोटो इंडिपेंडेंट डायनेस्टी देखुचंती तो सेठी हमें देखि दबा राइज ऑफ राजपूत्स हला एंड नियरली अराउंड 750 सहित तमरो मिडिवल स्टार्ट हेजिबो राइट तो दिस इज द जनरल टाइम फ्लो ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री नाउ दिस टाइम फ्लो जदि मन रखिच ताहले इफ देयर इज अ क्वेश्चन कि द संगम एज was a period or the Sangam age is an age which coincided with the rule of the Mauryans ताहले it is true or false definitely true contemporary kings रो बहुत सारा question आसे जे who was the contemporary of Chandragupta Maurya or who was the contemporary of Dhanananda or who was Alexander तो Alexander invasion को time रे हेतला Alexander invasion ए महाजनपदस time रे हेतला basically जहाँ भी foreign invasions ए time रे हेतला correct strong rule time रे foreign invasion नहीं कौन सी प्रकार स्ट्रॉन्ग रूल टाइम रे फॉरेन इन्वेशन नहीं महाजनपदस टाइम रे टिके फॉरेन इन्वेशन अछि तमरा साइरस डेरियस फिलिप्स अलेक्जेंडर एमाने सब ए टाइम रे अछंती प्लस मौर्यन पोस्ट मौर्यन रे भी शुंगस सॉरी शाकस पार्थियंस कोशणास एमाने सब अछंती तो जहाँ भी फॉरेन इन्वेशंस अछि सेटा सेई टाइम रे अछि जतने रीजनल डायनेस्टीज रीजनल किंगडम्स माने रूल करछंती तो तांको इजी होछि पेनिट्रेट करिवा पे वॉर करिवा पे सो एई सब क्वेश्चन जत आसो अलेक्जेंडर रो कंटेम्पररी किए थिले माने व्हेन अलेक्जेंडर केम फॉर द बैटल ऑफ हाइडेस्पस ताहले सेठी कंटेम्पररी रूलर इंडिया रे किए थिले दैट वाज धननंद वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी he was there in the contemporary तो ए contemporary rulers रो क्वेश्चन आसीबो जेमती बुद्धिज्म महावीर जैन एंड गौतम बुद्ध आर कंटेम्पररी टू ईच अदर तो तांको सहित आउ किए कंटेम्पररी रे थिले कि को रूलर रूल करूथिले करेक्ट माने कोशल डायनेस्टी वाज रूल्ड बाय हुम और दी कोशल महाजनपद कहार थिला मगधर किए रूलर थिले मगधर डायनेस्टी कहा अंडर रे थिला कंटेम्पररी रूलर्स ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आसे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव रे तो तांकर लिटरेचर तांकर बुक्स तांकर जहाँ भी टीचिंग्स आउ तांकर काउंसिल्स बुद्धिस्ट काउंसिल जैन काउंसिल तापर आसे जो तांकर बिलीफ सिस्टम ए ऊपर भी बहुत सारा क्वेश्चन आसे करेक्ट तो तांकर पॉलिसीज रूल्स बिलीफ्स तापरे तांकर लिटरेचर तांकर टीचिंग्स तांकर पाथ एट फोल्ड पाथ हला त्रिरत्नस हले जैनिज्म रो ऑल ऑफ दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस तो आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव रो तो बहुत सारा क्वेश्चन आसीबो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रो जस्ट कंटेम्पररी टाइमलाइन को डायनेस्टी रो रूल किमा मौर्यंस रू बहुत सारा मेजर क्वेश्चन आसे अबाउट द कलिंग वॉर जेहेतु ओडिसा पर्सपेक्टिव ओडिसा रे एग्जामिनेशन दउछ कलिंग वॉर इज एन इंपोर्टेंट वॉर खारवेळक रूल टाइम रू बहुत सारा क्वेश्चन आसीबो दिस इज ऑल्सो कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन रे कौन सारा चेंजेस होइतिला ओडिसा रे ता ऊपर क्वेश्चन आसीबो धौली रॉक एडिक्ट जोगाड़ रॉक एडिक्ट दीज आर इंपोर्टेंट रॉक एडिक्ट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर तांकर पिलर एडिक्ट्स रे कौन सारा आजिकली एबे दिस इज अ न्यू ट्रेंड ऑफ आस्किंग व्हाटएवर इज मेंशन्ड इन द पिलर एडिक्ट तो पिलर एडिक्ट रे कौन लिखा हिची भी एबे डायरेक्टली क्वेश्चन आसुची जे अमक स्लोगन अमक डायलॉग टा को पिलर एडिक्ट रे लिखा हितला व्हाट वाज माने एनिमल किलिंग रो डायलॉग टा को पिलर एडिक्ट रे लिखा हितला किबा मु माने द किंगशिप थ्योरी ऑफ अशोका एटा को पिलर एडिक्ट रे लिखा हितला तो दीज आर ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस दैट विल कम so in the next class we will discuss gradually from the Paleolithic age रो तमर important sites question रे आसे भीमबेटका कोलदीवा मेहरगढ़ आ तापरे आईवीसी रे तमर हरप्पा मोहनजोदारो कोन मिलिथिला को प्रकार सील्स को प्रकार आर्टिफैक्ट्स whatever the availabilities or the archaeological evidences तापरे we will discuss so I'll tell you all of these in a short span of time this is the timeline आउ किछरा short sessions रे I'll tell you कि कोन हेतिला and whatever the findings were से ऊपर केमिति क्वेश्चन आसे and how you will
attempt the question, correct? So this will all for today. Thank you.